Hey, so basically the idea was to wait and watch, and the 1 hour closing was good in terms of buying this. Came to 3 minutes. If you're watching my post market, I usually wait for a confirmation 1 hour, and I usually trade in 15 by looking at 3-minute charts. So after 10:15 close, uh, this was 10:15. After it came above 10 moving average around 900ish, I bought this and exited around 940. After this I broke. Initial stop loss was this. Then once this candle formed, I took the stop loss as VWAP. Why did I not want to wait and probably close after 12? Because of this, you see a resistance around 44,450. So didn't really want to take that risk. System trade did not trigger. They do not see any volumes again in Bank Nifty and Nifty. For Friday, I'll wait and watch again 1 hour how this closes, and then decide what to do. Thank you. ये मैंने बोला था कल के पोस्ट मार्केट में कि 1 आवर क्लोज का वेट करूँगा, उसके बाद डिसाइड करूँगा, और 1 आवर क्लोज 1885 के ऊपर क्लोज हुआ. तो इस वजह से अगर आप मेरा पोस्ट मार्केट देखते तो मैं यूजुअली 1 आवर क्लोज कंफर्मेशन मिलता है तो मैं 3 मिनट्स में आता हूँ. 3 मिनट्स का 1 आवर क्लोज ऑलमोस्ट यहाँ पर था, तो मैंने उसको 900 के आसपास उठाया, क्योंकि क्लोजिंग मोस्टली सब 10 मूविंग एवरेज के ऊपर ही हो रही थी और वो वीवैप के नीचे क्लोज नहीं हो रहा था. स्टॉप लॉस रखा कैंडल वीवैप के नीचे वाला. और टारगेट्स हमेशा ही कंफ्यूजिंग रहते हैं, स्पेशली जब मुझे नहीं पता कि वो ट्रेंड होने वाला है. तो जब यहाँ पर एक हायर लो बना तो मैं एग्ज़िट कर गया जैसे ही इसका हाई टूटा 940 के आसपास. ये एक प्रॉब्लम था, इस वजह से मैं जल्दी एग्ज़िट कर गया, क्योंकि ऊपर एक रेजिस्टेंस था 44,450, तो वहाँ पर रिस्क नहीं लेना था मुझे. सिस्टम ट्रिगर नहीं हुआ, वॉल्यूम्स नहीं है, स्ट्रक्चर वॉल्यूम्स नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है दोनों में. मंथली क्लोजिंग में तो होते हैं यूजुअली वॉल्यूम्स. देखते हैं फ्राइडे को मैं क्या करूँगा, वेट करूँगा फिर से और फिर डिसाइड करूँगा. थैंक यू.